Hello dear students, welcome to my channel Teaching IQ. Today we will discuss the most important theory, that is the classical conditioning theory. आमे जो theory विषय डिस्कशन करिबा एई theory related होची हमरो learning theory related एवं एई theory नोट टा मध्ये प्रिपेयर करछि नोट टा म डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे देबी एवं ता सहित जो नेक्स्ट पीरियड रे पढितली प्रीवियस रे पढितली कोन भाइगोस्की तार नोट मध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक रे दे देबी सेटा डाउनलोड करि परिबे। এবং দেখুন ক্লাসিকাল কন্ডিশনিং থিওরি হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টান্ট থিওরি যেউথরে কি আমার যে কোনসি টিচিং এক্সাম পাই তুমি প্রিপেয়ার হোছ সেথির গোটে क्वेश्चन বা দুইটা क्वेश्चन পাই পারিবো। চলো ক্লাসিকাল কন্ডিশনিং বিষয় ডিসকশন করিবা। ফার্স্ট জানিবা ক্লাসিকাল কন্ডিশনিং থিওরি কিয়ে দেইथिले প্রোফাউন্ডর কিয়ে তার প্রোফাউন্ডর হচ্ছে আমার ইভান পাভলভ। ইভান पावलव ये जने रूसियन साइकोलॉजिस्ट घर कोटी रूसियन ये रूसियन साइकोलॉजिस्ट रूसिया घर इवान पावलव से कौन गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले से एक्सपेरिमेंट थ्रू रे पिला मान को मध्य रे केई भले मार्क तांकर स्टिमुलस गोटे परमानेंटली डेवलप होची এবং তা সহিত পিলার কেবল ডেভেলপ স্কুল বা কলেজ रे केवल पिलार डेवलप होई से बते कोन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे हेल्प होई परुची से विषय से डिस्कशन करथिले। आम जो द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी टाइप डिस्कशन करिबा दिस टाइप ऑफ थ्योरी इज मेजर इन्फ्लुएंस इन स्कूल। ए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा पर बेसी इन्फ्लुएंस करता है विशेषकर स्कूल एंड कॉलेज रे। ओके तो इवान पावलव इज ए रूसियन साइकोलॉजिस्ट हिज प्रोफाउंडेड द थ्योरी। दिस थ्योरी इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज एसआर थ्योरी। तो मन रखते एसआर थ्योरी कौन एसआर थ्योरी इज स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थ्योरी। कौन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थ्योरी एटा होची स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थ्योरी एटा कोन कहै छै। अच्छा स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थ्योरी रे पढिबा पूर्व आमे तांकर एक्सपेरिमेंट जानिबा तांकर एक्सपेरिमेंट कोन छै दादा डिस्कशन करिया। से कोन करथिले गोटे कुकुर माने दैट मींस डॉग को से गोटे जगह बांधि दिले और बांधि देवा परे ताको से ऑब्जर्व कले दे कोन कले किछि से कोन कले पिला से कुकुर खाइबा को देले मन कर मीटा देले मीटा खाइला से मीटा देखले मात्र तार सालिवेशन स्टार्ट हला कोन हला सालिवेशन स्टार्ट हला सालिवेशन स्टार्ट हला से कोन से फोड को देखले पर सालिवेशन स्टार्ट होची से एमिति कले कोन कले ना गोटे बेल आनिले मन कर ए डॉग ता अछि देखिले फोड को देखले से ऑटोमेटिक तार सालिवेशन स्टार्ट हला कोन हला सालिवेशन स्टार्ट हला से कोन कले ना से डॉग टा को रखिले एवं फूड देले ता सहित कोन कले बेल टा को बजाइले बेल टा को रिंग कले देखिले कोन होची सालिवेशन स्टार्ट होची हां कि नहीं एई भले से रिपीट कले फूड देले बेल बजिले सालिवेशन स्टार्ट हला तार खाइबा सालिवेशन तार कोन होरे न्यूट्रल कोन गोटे रेस्पॉन्स आसिला फेर पुणी कोन कले से डॉग टा को रखिले सेठी फूड देलेनी फूड टा को से कैंसिल कर देले कोन फूड देले नाही बट बेल बजाइले कोन करले बेल बजाइले कोन हला सालिवेशन स्टार्ट हला ताने एइथिरे से गोटे स्टिमुलस एवं स्टिमुलस मतलब कोन गोटे उत्कंठा माने पिला कोन दिया जीव ता गोटे स्टिमुलस तटा कोन ता गोटे इंटरेस्ट कर मोटिवेट करा जीव ता स्टिमुलस तार रेस्पॉन्स कोन होची नहीं कि तार फीडबैक ता कोन आसी तो स्टिमुलस एटी कौन देले स्टिमुलस फूड दिया गला ओटा जे नेचुरल स्टिमुलस देला नहीं कि रेस्पॉन्स सालिवेशन नेचुरल सालिवेशन आसला जते बेले फूड दिया गला एवं आ गोटे कंडीशन रखा गला कोन रखा गला गोटे कंडीशन रखिले कोन रखिले बेल रखिले फूड देले बेल बजाइले सालिवेशन पुणी स्टार्ट हला रेस्पॉन्स आसला बट किछि दिन पर एभळे बारंबार कला परे फूड देले नाही से टाइम रे फूड देले नाही बट सेही समय रे कोन करले हमर बेल टा बजाइले बेल टा को रिंग कले सालिवेशन स्टार्ट हला। तो एइथिरे कोन होची ना किछि वर्ड्स एलिमेंट देथिले से एलिमेंट टा कोन एलिमेंट टा होची देखो एलिमेंट टा होची गोटे होची यूएस इट मींस अनकंडीशन स्टिमुलस कोन
अनकंडीशनल स्टिमुलस जेटा कि नेचुरल है कि शुणु नेचुरल एटा कौन नेचुरल थिला फूड थिला जेटा फूड देखले ऑटोमेटिक समस्त बाटे नाला आसु नै हला फूड आ गोटे कौन थिला यू आर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स ये कौन ऑन कंडीशन रेस्पॉन्स ओके ऑन कंडीशन रेस्पॉन्स ऑन कंडीशन जो सालिवेशन तार कौन रेस्पॉन्स आसला ना गोटे से कौन कहूँ तार स्टिमुलस हला पर किसी रेस्पॉन्स दबो एटा कौन सालिवेशन सालिवेशन एवं आ गोटे कौन छी सीएस सीएस मतलब कंडीशन स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस दैट मीन्स कौन है बेल बेल रिंग है एटा कंडीशन स्टिमुलस दिया गला ऑटोमेटिक कौन आसला कंडीशन रेस्पॉन्स सीआर कंडीशंस रेस्पॉन्स माने कौन है सालिवेशन टू बेल सालिवेशन टू बेल सालिवेशन टू बेल एटा थिला उछांकर कोन चारटा एलिमेंट विषय डिस्कशन करथिले सेटा आउ तार मध्यन प्रिंसिपल पढिबा एई परीक्षा रे जो नोटटा मु तयारी नोटटा प्रोवाइड करी मु देखेबी नोट सब पढाई देबी नोटटा कोन ता डिस्कशन कर देबा एटा थिला कोन जे बेसिक क्लासिकल कंडीशन ला बेसिक एतिकी जानिले आमे एग्जाम रे लिखि परिबा एवं ता सहित से कोन करथिले तार प्रिंसिपल थिला किछि कोन प्रिंसिपल थिला प्रिंसिपल डिस्कशन कर तापर नोटटा देखि जिबा प्रिंसिपल रे थिला होजी एक्विजिशन फर्स्ट कौन एक्विजिशन एक्विजिशन कौन बोले एक्विजिशन ले कौन ना मन कर आज इनिशियल स्टेज एक्विजिशन इनिशियल स्टेज आम गोटे पिला को कौन एक्विजिशन मतलब से एक्वायर कला किसी नॉलेज एक्वायर कला तो मन कर पिला को आम किसी रिवार्ड देले बारंबार से भल मार रखले ताको बारंबार चॉकलेट देले से ए बारंबार दवा द्वारा से ऑटोमेटिक कौन सेटा तार ऑटोमेटिक दिने तार सेटा हेबिचुअल हो जो इफेक्ट हो जो भाया आम रिंग बजैले बेल को फोड़ देल रिंग बेल बेल रिंग कले ताको फोड़ देले सालिवेशन हला ताने ऑटोमेटिक देखो तार ए भले एक्वायर हो गला सोशलाइजेशन को जाय एटा कोन एक्विजिशन सोशलाइजेशन को जाय से ऑटोमेटिक एमिति हो गला जे बेल बाजला को सालिवेशन आसी गला ऑटोमेटिक सालिवेशन आसी गला एटा को कोन को दे एक्विजिशन आउट अछि कोन एक्सटेंशन 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 कौन छे तर बारंबार तुम्हें कौन करिवो बेल बजेइबो फूड दबो नाही से ऑटोमेटिक कौन हबो तार सालिवेशन ना डिक्रीज हे जो सालिवेशन ना कौन हबो डिक्रीज हे जो माने धीरे धीरे डिसअपियर हे जो ताके एक्सटेंशन कहबे हला एई सब किछि वर्ड मन रखिबो एक्विजिशन कौन एक्सटेंशन कौन आउट थिला होची स्पॉन्टेनियस रिकवर कौन स्पॉन्टेनियस रिकवर एटा हे जाय बिले एटा एक्सटेंशन परे हे जाय माने कर तुम बेल कल फोर्ड देल नाही सालिवेशन डिसअपियर हेला ऑटोमेटिक ता परे किछि दिन पर ताको पूर्ण तुम फोर्ड देल बेल बजेलो ओके जे भले आमे किछि पाठ पढुथिला परे भूली जाय थाउ ताको पूर्ण थर रिपीट करला परे पूर्ण हमरो स्ट्रांग स्ट्रेंथनेस आस्ता है कि से स्पॉन्टेनियस रिकवर सही भलियाला मन कर तुम किसी दिन मन कर किसी दिन खाद्य देला परे सॉरी बेल बजेलो फोड़ देला से ऑटोमेटिक एक्सटेंशन हो गला माने विलुप्त हो गला थर थर ता पर कोन कलो अपने बेल बजेलो फोड़ देलो से ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस रिकवर आई पुणी से पूर्ण अवस्था को फेरी आसीबो देन आउट एज स्टिमुलस जनरलाइजेशन एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टिमुलस जनरलाइजेशन कोन स्टिमुलस याको मु नेउटर भल भाव डिस्कशन करी है देखनी स्टिमुलस जनरलाइजेशन कौन स्टिमुलस जनरलाइजेशन रे मन कर तुम किसी पिला बेल बजेलो सिमिलर बेल बजेलो चारटा सिमिलर 1 2 3 4 5 सिमिलर बेल बजेलो फूड देलो बट कौन कल ना फास्ट एमती कल तापर कौन कर ना फास्ट बेल बजिबो फूड दबो सेकेंड बेल बजिबो फूड दबो नाही थर्ड बेल बजिबो फूड दबो आ 4 बेल बजिबो फूड दबो नाही एई भळे हला परे से ऑटोमेटिक सब से कौन करिवो ना तुम जत्ते थर बेल बाजुथबो
सिमिलर बेल बाजतो से ऑटोमेटिक से फूड तार सालिवेशन होतो ताने कोन होची से माने से भाबिना बेल बाजिले मात्रे कोन हबो जनरलाइज ही गेला कन्क्लूज ड्रा करले बेल बाजिले मात्र फूड आसीबो मोर कोन हबो खाइबी एवरी साउंड सिमिलर साउंड को भाबे एलिमेंट ला भाबे कोन फूड आसीबो आउटे कोन अछि स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन किसी गोटे दरकार ना मो नोट सब लिखी गोड़ा स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहले कौन जे माने सी डिस्क्रिमिनेट करि परिबो डिफरेंशिएट करि परिबो जे कौन कौन साउंड आसिले मते खाद्य मिलिबो बार कौन कौन उपयोगी हेले स्कूल रे पढौछो पिलान को देखुछो कौन कौन उपयोगी हेले से लर्निंग टाको सक्सेसफुल हे परिबो तो चलो आमे डिस्कशन करबा कौन मो नोट जे लिखिछु से विषय डिस्कशन करे चलो देखा बेले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी व स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी इंट्रोडक्शन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज a type of learning that have major influence on the school thought in psychology known as behaviorism जो ए जे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये रिलेटेड कोन लर्निंग थ्योरी के रिलेट करूची कोन लर्निंग थ्योरी के रिलेट करूची तो लर्निंग थ्योरी रिलेटेड करूची माने एटा गोटे बिहेवियरिज्म पे डिपेंड करे discovered by Russian psychologist Ivan Pavlov, classical conditioning is a learning process that occurs association between an environmental stimulus and natural occurring stimulus. गोटे कौन तार नेचुराली जो तार निखोज स्टिमुलस एवं कहाँ से स्टिमुलस रिप्रेजेंट करछि एनवायरमेंटल स्टिमुलस तार एक्सपेरिमेंट जे हम कहितली से एक्सपेरिमेंट कोन देखिबा एक्सपेरिमेंट रे कहूछि Ivan Pavlov kept a dog hungry for a few days and then tried him to experiment tables which is filled with a certain mechanical control device. The dog was made of comfortable and distraction was excluded as far as to is possible से कौन करथिला तार कंफर्टेबल जे भले एभले मेजरू तार देखो केमिति रखिथिले जे हम पावलव एमिति रखिथिले देखो पावलव रखिथिले तार येटा एमिति थिला तार एक्सपेरिमेंट टेबलटा एमिति थिला आ ट्यूब फ्रॉम सालिवारी ट्यूब रखिथिला अपन कप फॉर ऑफ द मेजरिंग सालिवा थिला एमिति आ रिकॉर्डिंग डिवाइस फूड एंड यूए हम तार आगुटी हम देखंतु एई भले चार कोन फिगर टे ओके एटा थिला तार general figure the table experiment and kon kothle the observer himself remains hidden from the dog but was able to view experiment by means set of mirror se mirror setup करथिले जेडा देखिबा पई ओके से हाइड नहीं पसर होतले arrangement was made to give and out of his dog through a automatic mechanism ऑटोमेटिक मेकानिज्म कोन ते बळे फोटा को देखुची हैं ते बळे फोटा को देखुची डॉक्टर ते बळे कोन होची ऑटोमेटिक तार गोटे मेकानिज्म ऑटोमेटिक मेकानिज्म कोन होतलो ते बळे सैलिवेशन टू सी फूड लतला एंड ही रिप्रेजेंट फूड दैट डॉग विथ arranging for well and ring every times when the food was put before a duck and bell was rang तेते बळे बिफोर तेते बळे कोन हला खाद्य दबा पूर्वरु पिलार कोन होची तारे सॉरी खाद्य दबा पूर्वरु ताको कोन करले रिंग टाको बजाइले there was the automatic secretion of salivation from the mouth of the dog this activity was repeated several times after several times and the dog was given no food taxi food dele nai but the bell was rung in this case also amount of salivation secreted सेठी मध्ये कोन हला सालिवेशन सिक्रेशन हला खाद्य न देला परे ओके सेइटु से कंक्लूजन कोन करले तांकर टाइप्स ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट्स देयर आर फोर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कंडीशनिंग फर्स्ट कोन कहिथिले यूएस एंड यूआर सीएस एंड सीआर यूएस रे कोन अनकंडीशनिंग स्टिमुलस दैट मींस फूड unconditional response that means salivation conditioning stimulus that means bell conditioning response that means salivation to bell जेतबेले बेल बाजला अपने salivation हला
से विषय रिलेटेड लिखी देखा unconditioning stimulus, that means US, the representation of food to the ring duck is referred to as unconditioning stimulus because dog responds to the food and occurring naturally. केतेबेले से food टाको देखुची ऑटोमेटिक तार आउटपुट कोन ऑटोमेटिक तार रेस्पॉन्स आसुची नै कि अरे food टा कोन ओटा कंडीशन स्टिमुलस एटा कोन हतिरे रेफर करची एटा कंडीशन स्टिमुलस बिकॉज dog represent the food occurs naturally. Second analogy unconditioning response, এটা you are লিখি দেন তো এটা লিখে দিতে you are. Okay, salivation response to the food is called the unconditioning response because it is an initial reflex. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆସେ ସେ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ ସେ salivation କରୁଛି. Then asla conditioning stimulus. Conditioning stimulus, it means the bell is the conditioning stimulus because the dog must be learn associated with the directed response. So directed response of the desired response. Desired response ଅଛି बाजिला परे ऑटोमेटिक से कंडीशन है. कंडीशन मतलब कोन ओटा आर्टिफिशियल, एटा कोन आर्टिफिशियल, एटा नॉट नेचुरल, आर्टिफिशियल कंडीशन को. And CR means conditioning response. Salivation to the whale is conditioned response because the dog learned associated with the response of the conditioning stimulus. Okay. Then asla principle of classical condition. जेटा हम कहथली principle of classical conditioning कोन acquisitions. Acquisition is the initial stage of learning when a response is the first established and gradually strengthened. During the acquisition phase, the classical conditioning natural stimulus is repeated and paired to unconditioning stimulus. एटा कहथली बारंबार सेटा करिया द्वारा ऑटोमेटिक ग्रेजुअली सेटा तार स्ट्रेंथ ने दे मानो पिलार मैथमेटिक्स होनी से बारंबार प्रैक्टिस कला पर सेटा तार स्ट्रांग नै जाइतु से मैथ करिया पय ताको डर लागनथु सेटा कोन कहले एक्विजिशन. एटाको सोशियलाइजेशन आमी कोन सोशियलाइजेशन ओदे कहि दउ चलो सोशियलाइजेशन. Okay. For example, देखिए imagine that you are conditioning a dog salivation is response to the sound a bell. You repeated pair and represented a food with the sound with bell. You can say the response was acquired as soon as dog is begins salivation. Okay, इलाके बारंबार से salivation करूँ. That means extension कोना extension होची it is noted that the conditioning stimulus, that means एटा को जामे को ringing the bell, it is represented alone of number of times without food. आमी हेटा कोन करिया ring करिया बट food दबा नाही. This magnitude of the conditioning response is decreases and the finally disappearing. This process of the association with the called is extension. एटा कोन आमे extension कहता. Then asla spontaneous recovery. Spontaneous recovery कहथली extension पर एटा आस्था है. It was discovered by the Pavlov that after the extension, when of the conditioning response is no longer evident and the behavior often the reappear. एटा कोन पुणे reappear करबा disappear आइतो reappear करबा नै कि. And spontaneous but it is reduced intensity. एटा कोन but जो आकार ता intensity रे ऑटोमेटिक intensity कोन हो decrease हे जबो. Spontaneous recovery and it is the reappearance of the conditioning response after the periods of lessons response. किसी period परे ता पुणी तार strengthness को आसी जीवो. Then असला stimulus generalization. Stimulus generalization कोन stimulus generalization is the tendency for conditioning to effect similar response after the response has been the confidence. माने देखो एभळे से कोइथले एटा स्टिमुलस जनरेशन कोन से कन्क्लूड करियो दे जति की कोन बेल बाजुची सबु होची कोन खाद्य मिलियो मते. ओके लेट्स कोन हमें स्टिमुलस जन. फॉर एग्जांपल a dog has been conditioning to the salivation of the sound bell. The animals also exhibit the same response. जते बेल बाजू से सेम रेस्पॉन्स ही दबो. देन असला स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन. स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कोन बिले जो से डिफरेंशिएट करि परिबो. एटा कहिथले मते डिफरेंशिएट करिवो
Discrimination is the ability to differentiate between the conditioned stimulus and other stimuli that have been prepared enough the unconditioning stimuli. For example, if a well tune where the conditioning stimulus discriminated would be involved being able to the difference between the well tune and another stimulus of sound. कौन साउंड तो खाद्य मिलिबो और कौन साउंड तो खाद्य मिलिबोनी से विषय से डिस्कशन करथिले। ये थिला हमर टोटली तार डिटेल्स रो नोट 4 पेज रो नोट ए नोट तुम माने समस्ते जे कोनोसी एग्जाम में प्रिपेयर हो छ डिटेल्स सब पढिबो एवं ता सहित कोन जे कोनोसी बीएड करू छ जे माने कोन हमर सब्जेक्टिव नहीं से ए नोट को लिखि परिबो। जदि भिडियोटी भल लगी तेबे समस्त लाइक शेयर करने भूलबनी और सब्सक्राइब करने भूलबनी जहाँफल मुझे नुआ नुआ भिड आपको प्रोवाइड करी और लर्निंग थ्योरी रिलेटेड और जेकोसी आम क्लासिकल कंडीशनिंग हो थंडाइक आमर एरर मेथड हो आउ कौन अच्छे आमर हावड़ा गार्डनर पियाज सब थ्योरी मुझे प्रोवाइड करी धीरे धीरे है। थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।